Hello everybody and welcome to the ISC Guide. Today we'll be starting off with the first unit of psychology, that is the subject psychology. But before we do that, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने सारे टॉपिक्स कौन से सिलेबस को फॉलो करते हुए लिए हैं. So, if you are to go on the SISKI website and go to the ISC examination and थोड़ा सा नीचे scroll अगर आप करेंगे, then you will find this regulations and syllabus ka section, and if you were to scroll down here, then you will find this regulations and syllabuses for ISC 2027. This is the syllabus that will be followed by the people who will be giving the board exams in the year 2027. So if you're currently in grade 11, you will be following this syllabus. And if you are to scroll down here, you will find your psychology syllabus. And we'll be following this exactly word by word. We will not be missing any topic. और हम लोग इसके बाहर का भी कोई टॉपिक नहीं लेंगे. एंड रेस्ट अश्योर्ड, ना ही आपका स्कूल इससे बाहर से पूछ सकता है, ना ही आपकी टीचर. तो I suggest we dive right into it. Okay, so let's start off with the basics. We'll start off with the definition of psychology. Psychology is the study of mind and behavior. This definition was given by the American Psychological Association और APA. अभी मैंने इसको हाईलाइट इसके लिए करके रखा है क्योंकि इट इज़ इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट कि आप ये अपने एग्जाम में लिखें. अगर आप ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. अभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर डेफिनेशन के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो डेफिनेशन देने वाले रिसर्चर का नाम देके रखा है तो आपको कंपल्सरीली उनका नाम लिखना ज़रूरी है. एंड इट हैज़ टू बी द फुल नेम, नॉट द शॉर्टेंड नेम. So let's move on to the next definition, which is behavior. Behavior is the observable overt actions that can be scientifically studied. For example, sleeping. कुछ भी बैठ के अगर आप पढ़ भी रहे हो, that is also your behavior as I can observe कि आप बैठ के पढ़ रहे हो. Stimulus. Stimulus is the internal and external change that elicits a response from an organism. Example, ringing of an alarm clock. तो मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स देके रखे हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए. और साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों में इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज़ का एग्जाम्पल लिखो. इट डज नॉट मीन कि आप घर से एग्जाम्पल रट्टा मार के जाओ. दैट इज़ नॉट व्हाट दे एक्सपेक्ट. दे वांट सूटेबल एग्जाम्पल्स फॉर ऑल द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ताकि उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखे. राइट? तो यहाँ पे स्टिमुलस is given ringing of an alarm clock. तो stimulus is any event जिसकी वजह से आप कुछ एक्शन कर रहे हो या फिर आपके बॉडी के अंदर कुछ एक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे जब अलार्म क्लॉक बज रही है then you are reaching out to snooze it या फिर you are reaching out to turn it off. So that is your response. And response is the change that takes place in an organism or due to an organism because of a stimulus. एग्जाम्पल स्नूजिंग द अलार्म क्लॉक. मैंने अभी जस्ट समझा है, ये सेम चीज़ है. अगर कोई अलार्म क्लॉक बज रही है एंड इफ़ यू आर रीचिंग आउट टू साइलेंस इट या फिर स्नूज इट, वो आपका रिस्पॉन्स हुआ व्हेन द रिंगिंग ऑफ एन अलार्म क्लॉक इज द स्टिमुलस. नाउ वी मूव ऑन टू द अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी. ये वाला क्वेश्चन मोस्टली तो 4 मार्क में आता है हर पेपर में. मैंने जितने भी पेपर्स एनालाइज किए हैं 4 मार्क से ज़्यादा कहीं पे भी पूछा नहीं है. But it is essential for you to write all 5 of these approaches. And अगर आप अपना syllabus देख रहे हैं वहाँ पे दिया गया है कि you have to learn 2 psychologists of each of these approaches. तो वो भी मैंने यहाँ पे दिए हुए. Behavioral approach focuses on the observable overt actions of an organism. Those psychologists are John B. Watson and Boris Frederick Skinner. अभी देखिए BF स्किनर नाम आपने शायद सुना होगा बट उसका फुल नाम इज बोरिस फ्रेडरिक स्किनर. यहाँ पे मैंने जॉन बी वॉटसन दिया हुआ है एंड मैंने बी को फुल नहीं किया हुआ है. क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट द मिडिल नेम. कॉग्निटिव अप्रोच focuses on cognitive processes like memory, thought and reasoning. Two psychologists are John Piaget and Aaron Beck.
Biological approach focuses on the biological events and processes that underlie behavior. Rothersberry and Knight Dunlop. Psychodynamic approach focuses on the role of hidden unconscious internal processes. Sigmund Freud and Carl Jung. Social and cultural focuses on the social and cultural factors that can influence behavior. Lev Vygotsky and Albert Bandura. अभी ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कुछ अपने रूम में ढूंढ रहे हो एंड आपको नहीं मिल रहा, तो इवेंचुअली यू कॉल इन योर रूममेट इन ऑर्डर टू हेल्प यू. अभी देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट्स ऑफ डिफरेंट अप्रोच वो इवेंट को कैसे स्टडी करेंगे. द साइकोलॉजिस्ट्स ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच विल लुक एट योर बिहेवियर कि आपने और आपके रूममेट ने क्या डिफरेंट चीज़ें की इन ऑर्डर टू रीच द ऑब्जेक्ट दैट वाज इन द रूम समवेयर. कॉग्निटिव अप्रोच वाले क्या देखेंगे? कॉग्निटिव अप्रोच वाले देखेंगे कि आपने किस पॉइंट पे गिव अप किया, राइट? आपने गिव अप किया तो व्हाट वर योर थॉट्स बिहाइंड इट, एंड जब आपका रूममेट आया तब उसके क्या थॉट्स चल रहे थे. बायोलॉजिकल अप्रोच वाले साइकोलॉजिस्ट विल वंडर वेदर आपके विजुअल सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से आपको नहीं दिखा. दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो जो भी आपके बिहेवियर के पीछे बायोलॉजिकल रीजंस हो सकता है, दैट इज व्हाट द साइकोलॉजिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल अप्रोच वुड फोकस ऑन. Psychodynamic approach वाले psychologists are a bit unique. According to them, जो भी आप चीज़ें करते हैं they are due to hidden unconscious internal processes. तो a psychologist of the psychodynamic approach might think कि आपने जानबूझ के वो ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढा क्योंकि आप चाहते थे कि आपका रूममेट आए and he or she would find the object for you as a sign of their affection towards you. फिर social and cultural वाले psychologists would see it in a way that उनके social and cultural upbringing या फिर the social and cultural background they have उससे क्या कुछ उनके object finding abilities पे कुछ affect हुआ है क्या. For example, the people of hilly regions are often considered to have better object finding abilities due to their high altruism. तो क्या वो hilly region से है तो मे बी इसकी वजह से he was able to find the object quicker than you. Now we will move on to the schools of thought of psychology. The first one is structuralism. It is an early view of psychology suggesting that the field should focus on identifying the basic structures of the human mind. It was proposed by William Wundt. The method used for research was introspection. Introspection is a method in which trained individuals report in detail their conscious experiences in response to specific stimuli that are presented to them under carefully controlled conditions. It gave psychology its empirical and scientific character. ये विलियम वुड जो बंदा था, he was the one who established psychology as a scientific field. He emphasized that psychology has to be empirical and scientific in character. इसके लिए he developed a method, he pioneered the method of introspection. Now, introspection is a research method, and research method is something we'll be delving deeper into in Unit 2. But introspection is a research method that was followed by structuralists and functionalists, which is the next school of thought. But इसमें क्या होता था, trained individuals रहते थे and there would be the researcher. The researcher would control the environment in which the trained individuals would operate. तो certain stimuli को expose करवाते थे and then they would note down the responses and their behaviors in reaction to the stimulus they had provided them with. तो ये experimental study होती है which we'll delve deeper into in Unit 2 of psychology. Functionalism. It is an early view of psychology suggesting that it should focus on the functions of consciousness. It was founded by William James. It was largely influenced by Charles Darwin's theory of evolution. It believed that humans evolved consciousness because it serves an important function for us. These ideas have found home in evolutionary psychology.
It is believed that functionalism is very close to what modern psychology is today. They primarily use the method of introspection. जैसे मैंने बताया, their research method was also introspection. Functionalism was now founded by William James. अभी इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? In, they thought that instead of just studying the structure of the mind, they wanted to study the functions of consciousness. क्योंकि उनके हिसाब से we humans have developed consciousness because हमारे लिए कुछ important function provide करता है वो. क्योंकि हर एक एनिमल, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक प्लांट या ट्री के पास कॉन्शियसनेस नहीं होता, बट इट वॉज डेवलप्ड इन अस ह्यूमंस, तो देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट. And since this comes under evolution, they were largely influenced by Charles Darwin's theory of evolution. But now, eventually, this idea was discarded and behaviorism took its place, which is the next school of thought. But this idea has now found its place in evolutionary psychology. Behaviorism. It is the view that only observable overt actions that can be measured scientifically should be studied in psychology. It was founded by John B. Watson, and it was quickly adopted as many psychologists had grown bored of studying consciousness and using the method of introspection. It believed that we should focus on behavior of organisms rather than make assumptions about their internal processes. Burrhus Frederick Skinner was perhaps the most prominent behaviorist. This school of thought was founded by John B. Watson, and the psychologists were quick to adopt it क्योंकि वो लोग बोर हो गए थे बार बार दो स्कूल ऑफ थॉट से. दे वर यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन, and studying consciousness is just one aspect of psychology. Psychology is a vast field and इतने सारे interesting topics हैं that you can research into. So if you're just studying the functions of consciousness, that is a bit bounding. So it is understandable that the psychologists got bored of it, and that's why behaviorism was an alternative to them. क्योंकि behaviorism में तुम जितने भी observable actions थे of the organisms तुम पढ़ सकते थे, and you can venture beyond humans too. For example, B.F. Skinner की one of the most popular studies जो थी, that was done on a rat in the Skinner box, जो हम लोग learning chapter में सीखेंगे. Now the next school of thought is psychoanalysis. It was developed by Sigmund Freud. Psychoanalysis is a method of therapy based on Freud's theory of personality, which involves a therapist bringing repressed unconscious material from the unconscious to the conscious. The id, the ego, and the superego are the parts of personality according to Freud. Our personality and mental disorders arise due to interactions and struggles between these three parts. Anna Freud, Carl Jung, and Erik Erikson are other psychologists of this school. So psychoanalysis was founded by Sigmund Freud, one of if not the most famous psychologist. अभी इसका जो थ्योरी था ऑफ पर्सनालिटी, द एड ईगो एंड सुपर ईगो, आपको 11th ग्रेड में बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे मैंने सिर्फ वर्ड्स लिखे रखे क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइको एनालिसिस, बट ये सब आपको डीपर सिखाया जाएगा इन ग्रेड 12. बट आई एम स्टिल गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट इट. तो एड क्या होता है? एड में आपके जो डीपेस्ट डिजायर्स होते हैं, जो आप मोस्ट लोगों को दिखा नहीं पाते, दैट इज योर एड. The id works on the pleasure principle, so it always strives towards pleasure. So your aggression and your sexual desires all come under the id. Now the ego is often known as the mediator. अभी mediator किनके बीच में? The id and the super ego के बीच में, क्योंकि super ego होता है morality वाला. तो सुपर ईगो इज ऑल योर इंटरनलाइज मॉरल्स जो आपने बचपन से इंटरनलाइज करके रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि यू शुड नॉट स्टील, या फिर आप बड़ों से ऐसे बात नहीं कर सकते. दोज आर ऑल इंटरनलाइज मॉरल्स, एंड द इड इज कम्प्लीटली वाइल्ड. उसको वो सब करना है जिसकी वजह से उसको प्लेजर मिलेगा, राइट? तो दीज ऑफन क्लैश एंड दीज ऑफन कॉन्ट्रास्ट ईच अदर. तो वो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, ताकि हम लोग ज़्यादा ही मॉरल ना बन जाए या फिर हम लोग ज़्यादा ही वाइल्ड ना बन जाए, देयर इज द ईगो विच एक्ट्स एज द मीडिएटर, एंड दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी.
तो दोनों को रियलिटी में बांध के रखता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू बी टू गुड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू बी टू वाइल्ड. तो इट बाइंड्स टुगेदर देम इन रियलिटी ताकि हम लोग रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट रह सके. Gestalt psychology. It is a view of psychology which believes that we experience things as a whole. They believe we must not break down thoughts and behavior into the smaller elements to study them, but rather look at them as a whole experience. Gestalt psychologists believe that the whole is greater than the sum of its parts. This school was developed in Germany and Austria, opposing the molecular approach of structuralism. Wolfgang Kohler, Kurt Koffka, and Max Wertheimer co-founded Gestalt psychology. अभी as you can see, जो structuralists थे वो लोग in order to study behavior and in order to study psychological processes, what they would do, they would break it down into the smallest elements. जितना छोटा हो सकता है उतना छोटे में वो लोग डिवाइड कर देते थे ताकि वो लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सके, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर्स ऑफ द माइंड पढ़ने थे. तो इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स यू हैव टू डिवाइड देम फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. तो अभी अगर मुझे इमोशन पढ़ना है तो इमोशन में बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस यूज होता है. बट सिंस स्ट्रक्चरलिज्म wanted to study the structures of the mind, they would divide these emotions into different parts. कि ये वाला एक मेमोरी से आया है तो ये मेमोरी में डिवाइड करो, लेकिन ये वाला इमोशन यहाँ का है इसको यहाँ पे डालो. ये कुछ थिंकिंग की वजह से ये वाला इमोशन आया है तो इसको थिंकिंग वाले पार्ट में डिवाइड करो. So that's how the structuralists used to work. But Gestalt psychology के हिसाब से the Gestalt psychologists said कि हम लोग जब एक इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं we do it as a whole. तो जो इमोशन है मुझे पूरा फील हुआ है. So if we divide it into the smallest elements, it would make no sense. क्योंकि हम लोग वो चीज़ को एज अ होल एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो सो इन ऑर्डर टू स्टडी व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन अस, हम लोगों को उसको एक एज अ होल ही पढ़ना पड़ेगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स. साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स. आई बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे पेपर एनालाइज किए थे फॉर ग्रेड 11 साइकोलॉजी. मैंने एटलीस्ट 15 स्कूल्स के पेपर्स भी चेक किए हैं, but I have not found any questions related to this topic in any of those papers. And मेरी understanding ये है कि this topic is given in your syllabus in order to make you understand what kind of fields are also available in psychology. तो अभी हम लोग उन्हीं को explore करेंगे तो you get a better understanding for your future. Psychology and economics. They are closely related in the field of behavioral economics. It examines how psychological factors influence economic decision making. One of the key psychological principles affecting economics is cognitive biases, such as the loss aversion effect, where individuals fear losses more than they value equivalent gains. Additionally, concepts like motivation, risk perception, and decision making in psychology play a significant role in economic behavior. अभी मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल्स के लिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे के रखा है लॉस अवर्जन इफेक्ट का. बट इफ़ यू वांट एन एग्जाम्पल दैट इज़ विद इन योर सिलेबस, तो द मैस्लोज नीड हायरार्की जो आप मोटिवेशन एंड इमोशन वाले यूनिट में करेंगे, दैट इज़ ए कॉमन थ्योरी दैट इज़ इन बोथ साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द पीपल, राइट, वो एक एस्पेक्ट रहता है साइकोलॉजी का. एंड इकोनॉमिक्स is concerned with the financial behavior of the people कि ये लोग किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर क्या चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं बाय करने के लिए. तो दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज इंटरेस्टेड इन. तो बोथ ऑफ देम आर क्लोजली रिलेटेड. Psychology and political science. One major link between the two fields is political psychology, which studies how psychological factors shape political beliefs, voting behavior, and ideology. Concepts like cognitive biases, confirmation bias, and groupthink explain why people often support political parties or leaders that align with their pre-existing beliefs, even when presented with contradictory evidence. The study of mass psychology helps analyze how propaganda, media, and social movements influence public opinion and political participation. I think it's pretty straightforward. You all live in this country, so you know the political state of it too. तो अभी अगर हम लोग confirmation bias को देखेंगे तो the confirmation bias basically is आप
के जो ऑलरेडी बिलीव्स हैं, अगर उसी को आके कोई रीइंफोर्स करेगा तो यू विल अग्री विद देम even though there is evidence that the person is bad. Psychology and law and criminology. Psychology and law and criminology are closely related fields, as both seek to understand human behavior, particularly in legal decision making, criminal actions, and rehabilitation. This intersection is widely studied under forensic psychology and criminological psychology. Theories such as Freud's psychoanalytical model and Bandura's social learning theory help explain why some individuals engage in deviant behavior. So, जो Bandura social learning theory है, you have this in the learning unit of your syllabus. It is more commonly known as the Bovodol experiment. And अगर हम लोग law and criminology के हिसाब से भी देखेंगे, तो if there is a victim, राइट, उनको भी रिहेबिलिटेशन चाहिए रहता है, वरना इफ देर इज ए जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, फॉर एग्जांपल कोई अंडर एज किसी भी पर्सन ने क्राइम किया है, तो दे आर ऑफन सेंट टू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इंस्टेड ऑफ जेल्स. तो साइकोलॉजी इज ऑल्सो यूज देयर फॉर लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी. Psychology and sociology. One key link between them is social psychology, a subfield that merges both disciplines by studying how people's behavior, attitudes, and decisions are influenced by social interactions. Another connection is in areas like mental health, crime, and cultural behavior. Sociology examines the broader societal factors affecting mental health, such as poverty, discrimination, and family structures, while psychology explores internal factors like cognition and personality. इसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया, but an example that you can take, which is also in your 11th grade का syllabus, is from the sociology का syllabus, that is your looking glass self theory. एंड वो थ्योरी साइकोलॉजी में तो अभी नहीं है, बट वी डू नॉट हैव द सोशल साइकोलॉजी यूनिट इन ग्रेड 11, दैट इज इन ग्रेड 12. तो अगर आपने सोशियोलॉजी लिया हुआ है तो द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी वुड बी अंडरस्टैंडेबल अगर आप लिखोगे तो. एंड इवन अगर आपने सोशियोलॉजी नहीं लिया, इट इज कम्प्लीटली फाइन इफ यू राइट दैट. इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल इन दिस केस. Psychology and computer science. Psychology and computer science are interconnected in various fields, particularly in human computer interaction, artificial intelligence, cognitive science, and machine learning. One of the strongest links between the two is cognitive science, which combines psychology, neuroscience, and artificial intelligence to understand how humans think, learn, and solve problems. As AI and robotics advance, integrating psychological insights into computer science will be essential for creating machines that interact more naturally and ethically with humans. So, one example that would be from your syllabus is the PDP model of processing. अभी ये जो PDP मॉडल है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल, ये एक मेमोरी मॉडल है which explains how humans store memory. So this is from your memory unit in grade 11 and very interesting theory. तो it basically says that अगर आपकी कोई memory store हो रही है तो it is stored in the nodes of your neurons, and जो nodes है they are spread out across your brain. एक ही जगह पे आपकी एक memory store नहीं होती है. So the different aspects of the memory are stored in different nodes of your neurons which are spread across your brain. तो in order to activate a memory, बहुत सारे reactions को होना पड़ता है in your brain. So your nodes go off through electrical signals. ये थोड़ा complex topic है, तो we'll get into it in the memory unit. But still, electrical signals जब activate करते हमारे nodes को in our neurons, that is when we remember a memory. Psychology and mass media. Both fields study human behavior, perception, and influence. One key area of overlap is media psychology, which explores how people consume and respond to media content. Another important connection is in social media and digital communication, where psychology helps understand how platforms influence self perception, identity, and mental health. अभी अगर आप देखेंगे, it is a growing topic of debate. Most of the debates that I have seen nowadays एक ही टॉपिक को करते हैं, whether social media is good or harmful. अगर आप argumentative essays में जाओगे तो that is a very common topic.
So, in order to study the effects of social media on mental health, वरना on the development of children, for example, ये सब को study करने के लिए psychology is the field, क्योंकि the mental health comes under psychology and your development as a child also comes under psychology. तो अगर आप दोनों का interaction study करना चाह रहे हो तो that is where media psychology comes in. Psychology and music and fine arts. The relationship is crucial in fields like music therapy, art therapy, and the psychology of creativity. One major connection is in music psychology, which studies how music affects emotions, memory, and brain function. Additionally, psychology plays a crucial role in understanding creativity and artistic expression, such as theories of divergent thinking. तो अभी ये जो थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग है दैट इज इन योर यूनिट 7 जो थिंकिंग यूनिट है बट डाइवर्जेंट थिंकिंग इज बेसिकली जिसकी वजह से आपको क्रिएटिव थॉट्स आते हैं राइट एंड अभी अगर हम लोग जाते हैं म्यूजिक साइकोलॉजी में तो म्यूजिक साइकोलॉजी में यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है ऑफ म्यूजिक थेरेपी एंड आर्ट थेरेपी तो बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर when they are sad, when they are feeling a bit down, when they listen to music, they feel happier, right? So that comes under music therapy. Now we have the fields of psychology themselves. अभी आपको easy बनाने के लिए I have written down a mnemonic which is codes और CODES. अगर आप इससे easy और mnemonic बना पा रहे please I request you drop them down in the comments ताकि it benefits all of the people that are watching this video. बट मैंने ये बना के रखा है तो इसलिए आई एम गोइंग टू फॉलो दिस फॉर द वीडियो. For the first two C's, we have clinical psychology and counseling psychology. O stands for organizational psychology. D is for developmental psychology. E is for educational psychology. And S is for social psychology. तो देखते हैं what these fields actually mean and do. Clinical psychology. It studies diagnosis, causes and treatment of mental disorders. Example of disorders are PTSD or eating disorders. It uses therapies like cognitive behavioral therapy and psychoanalysis. अभी आप देख रहे हैं सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हुए मैंने ऐसा क्यों तो इफ़ यू वर टू एनालाइज पेपर्स जैसे मैंने करके रखा है तो व्हाट आई हैव सीन इज दिस क्वेश्चन इज ईदर आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स वरना 7 मार्क्स एंड अगर आप 7 मार्क्स के लिए भी लिखने जाओगे तो यू हैव इनफ पॉइंट्स लिखने के लिए तो योर हेडर्स ईच आर 1 मार्क एंड उसके नीचे अगर आप 3 पॉइंट लिख रहे हो दैट इज मोर देन इनफ सिंस यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल तो दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ फॉर इट राइट. तो अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी जब मोस्ट लोग साइकोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं दिस इज व्हाट दे आर गोइंग आफ्टर. So they want to diagnose disorders in people and they want to help them out. So that is what clinical psychology covers. Counseling psychology. It assists individuals with personal problems that do not involve psychological disorders. Example, problems faced in relationships, relationship counseling. It also assists people for academics. Example, guidance counselors. अभी most people को मैंने जो देखा है they get confused between clinical and counseling psychology, but the main distinction between them is that clinical psychology deals with psychological and mental disorders but counseling psychology में they assist individuals. There is a difference. वहाँ पे थोड़ा जो seriousness of the problem रहता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है since it's a proper disorder, but यहाँ पे normal कोई everyday problem भी हो रही है अगर कोई कपल में कुछ झगड़ा भी हो जा रहा है दैट इज ऑल्सो डेल्ट विद इन काउंसलिंग साइकोलॉजी. But counseling psychology is not restricted to that, it is also extended to things like academics. So if you want to go abroad for example, so you will probably need a guidance counselor for that and that also requires counseling psychology. Developmental psychology. It studies how people change physically, cognitively and socially over their life. It studies developmental disorders like autism or ADHD. Example, infantile amnesia. Infantile amnesia आपको कवर किया जाएगा later in your memory unit, but basically it is when you cannot remember the memories of your childhood below the age of 1, 2, 3. So that is infantile amnesia. Educational psychology. It studies all aspects of the educational process. It helps in developing new learning and teaching methods.
It also helps in specialized learning for kids with learning disabilities. Example of learning difficulties are dyslexia and dysgraphia. So educational psychology में if you are an educational psychologist, you will probably working on finding new ways for people with learning disabilities like dyslexia, dysgraphia. तो अभी commonly for these people we use phonics, but you can develop a new method. शायद you develop a game जिसकी वजह से उनको ज़्यादा easier समझ में आ रहा है. So that all comes under educational psychology. Organizational psychology. It studies behavior at workplaces. It is helpful in recruiting, training, and stress management. It also helps in moral boosting. Example, expectancy theory. So, abhi the expectancy theory of motivation is a topic that will be covered in your motivation and emotion unit, but it basically states that people work for incentives. It is the pull theory of motivation. So basically जो incentives रहते हैं they pull the individual towards them, जिसकी वजह से they put in more effort and work harder. Okay, now we are at importance and aims of psychology. ये fields खत्म हो चुका, and this question is asked for 4 marks maybe. I have not seen it above that. Maybe 7 marks का पूछ सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. ऑफ कोर्स साइकोलॉजी का अगर आप डेफिनेशन ही देखोगे उसमें इट इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. तो साइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि व्हाई यू आर एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, या फिर व्हाट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स दैट मेक्स यू एक्ट इन अ सर्टेन वे. तो that is understanding human behavior, an important aim of psychology. Mental health and well-being. Again, if you refer back to the definition, it is a study of mind behavior, and आपका mind का well-being is your mental health. So psychology aims to look after mental health too. It does so through different fields like clinical psychology हो गया, छोटे problems है तो counseling psychology हो गया. Enhancing education and learning. जैसे मैंने आपको बताया था पहले, enhancing education and learning is also important. Educational psychology is a whole field of psychology in itself. Now we have workplace productivity and leadership. We discussed this in organizational psychology, the expectancy theory, कि what keeps people going. तो अगर आप incentive set करोगे तो maybe they'll achieve their targets by the end of the month. एक बहुत classic example है, but this works too. Personal development and self awareness, ये भी बहुत important है. If you are going to buy any self help book, वो जो भी चीज़ें आपको recommend करेंगे, जो अच्छी चीज़ें recommend करेंगे, that would be a psychological concept या फिर a psychological change that you can make. Social change and problem solving. It helps address societal issues. अभी आप सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्राइम हो गया, एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी इशू आपको उसका रूट कॉज ढूंढना पड़ता है, राइट. एंड जो रूट क्रॉस रहता है फॉर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एडिक्शन हुआ या फिर ट्रॉमा हुआ, तो देर इज अ डीप रूट कॉज हिडन इनसाइड आवर माइंड्स, एंड वो कॉज को पता लगाने के लिए साइकोलॉजी हेल्प्स. एंड अगर आपको कॉज पता चल गया है then you can work on finding a solution. Now we move on to the second part of this unit, which is heredity and environment. If you were a student of class 10 ICSE biology, ये part will be extremely easy for you क्योंकि it is a repetition of what you did in chapters 1 and 2 of biology. The definition of heredity, it is a transmission of genes from the parents to the offsprings. तो जो जीन्स रहते हैं पेरेंट्स के, वही वाले जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर चिल्ड्रन. प्रिटी कॉमन नॉलेज. Chromosomes are highly coiled ribbon-like structures formed by chromatin fibers during cell division. Let's see a diagram of chromosomes ताकि आपकी understanding better हो सके. I'm not going to tell you what 1, 2, 3, 4 is, but I want you to focus on the whole diagram. If you are to see closely, ये जो पूरा structure है वो डूडल जैसा दिख रहा है, एंड इट इज हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट. तो अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करोगे, ये एक ही लाइन को अगर आप कॉइल कर दोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एंड वो रिबन लाइक है अगर आप उसका वेवी पैटर्न देख रहे हो तो क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय क्रोमैटिन फाइबर्स. अभी ऐसा वाला स्ट्रक्चर कोई फाइबर ही दे सकता है, राइट. So it is chromatin fibers during cell division. Chromatin fibers have the genetic material that is required for the transmission of genes. तो आपके genes जो stored रहते हैं वो chromatin fibers में store होता है. Now we have dominant gene and recessive gene.
Dominant gene is the one which is able to freely express itself regardless of other genes being present. Recessive gene is the one which is suppressed in the presence of the other dominant gene. अभी अगर आप ये आईज देखेंगे, राइट, तो जो ब्राउन आई रहता है दैट इज फॉर एग्जांपल द डोमिनेंट जीन, तो अभी इसको हम लोग कैपिटल बी लिखते हैं. एंड जो ब्लू आई है, लेट्स से दैट इज द रिसेसिव जीन. तो जो रिसेसिव जीन रहता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. तो ब्राउन आई वुड बी कैपिटल बी एंड द ब्लू आई वुड बी स्मॉल बी. तो अभी क्या होता है जब कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एक ही साथ एक जीन में प्रेजेंट है, इट वुड मीन व्हाट, क्योंकि कैपिटल बी है तो इट वुड ओवरशैडो द ब्लू ह्यू दैट द स्मॉल बी वाला जीन वाज सपोज्ड टू गिव टू द आई. आई होप आप समझ रहे हैं, राइट. तो अगर स्मॉल बी अगर हम लोग दो ले ले तो देर इज नो डोमिनेंट जीन टू ओवरशैडो द ह्यू ऑफ द स्मॉल बी, राइट. तो वो ब्लू कलर की ही आएगी जब दोनों स्मॉल बीज रहेंगे. बट अगर आप एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी ले लोगे दैट वुड मीन दैट आपका आई ब्राउन कलर का होगा, क्योंकि जो आपका ब्राउन वाला जीन है दैट ओवरशैडोज वरना सप्रेसेस द ब्लू जीन. Now we have environment. It refers to the external surroundings that shape experiences, personality, attitudes and skills. तो आप अपने आसपास देखो, आप जहाँ पे भी बैठे हो that is your environment. पंखा चल रहा है that is a part of your environment. Everything that is around you, that surrounds you, the people that are around you and surround you, those are all part of your environment. अभी इसमें 3 लॉज देके रखे हैं. These are incredibly important laws. ये आपको अनफॉर्चुनेटली मेमोराइज ही करना पड़ेगा. यू हैव नो अदर ऑप्शन एंड सिंस दे आर लॉज यू हैव टू मेमोराइज देम वर्ड बाय वर्ड. Law of dominance basically works on the principle of dominant and recessive genes. So out of a pair of contrasting characters present together, only one is able to express itself while the other remains suppressed. मैंने अभी आपको explain किया, right? अभी अगर pair of contrasting characters, तो there is one dominant gene and there is a small gene, the capital B and small b, they are present together. Only one is able to express itself, and वो कौन सा वाला रहता है? Dominant gene. The capital B, which is of brown, is able to express itself, but जो blue वाला रहता है small b, that remains suppressed. Now we move on to the law of segregation or purity of gametes. States that a pair of factors present together separate during gamete formation. जब gamete form किया जाता है तब जो आपके characters रहते हैं, right, characters वरना factors alleles, वो दोनों साथ में जब प्रेजेंट रहते हैं दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. अभी इसका वर्किंग गोज इनटू पनेट स्क्वायर्स व्हिच इज नॉट इन योर सिलेबस एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इन ऑल ऑनेस्टी, तो आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग इट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Law of independent assortment states that the distribution of alleles of one character into the gametes is independent of the distribution of the other character's alleles. अभी इसमें बेसिकली ये भी पूरा पनेट स्क्वायर्स के ऊपर ही है. आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इट इज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ इंटायरली आउट ऑफ योर सिलेबस. तो अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको बोलना पड़ेगा टू मेमोराइज दिस. आई हेट मेमोराइजिंग थिंग्स बट ये ऐसी चीज़ आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा. मेंटल रिटार्डेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों सेम चीज़ें होती है एंड दीज आर द स्टेजेस. माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जो IQ रहती है of the person, it is between 50 to 70. Now before diving deeper into this, IQ refers to intelligent quotient and एक average human का intelligent quotient is around 100. तो अगर आप कोई भी IQ का ग्राफ देखने जाओगे, बेल कर्व जो आप यूनिट 2 में कवर करोगे, दैट इज ऑलवेज उसका मीन मीडियन मोड हमेशा 100 आता है, राइट. तो जो एवरेज रहता है दैट इज ऑलवेज 100. तो 100 से नीचे है तो अब बिलो एवरेज इंटेलिजेंस का पर्सन होता है. तो फॉर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन IQ is between 50 to 70. Person appears normal in social situations but has difficulties in complex tasks and can take care of himself. तो basically ये जो person है he or she can lead a normal life but ज़्यादा complex चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब ऐसे they can't become a mathematician sadly. Moderate mental retardation, IQ is between 35 to 49. Person can learn up to a second grade level and requires supervision in daily life tasks.
ये लोग सब इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, इन लोगों को थोड़ी चीज़ों में हेल्प चाहिए रहेगी. Severe mental retardation. IQ is between 20 to 34. The person can learn simple activities like feeding with intensive training and requires constant supervision in daily life. सिंपल एक्टिविटीज में खुद को खाना खिलाना या फिर बटनिंग देयर शर्ट, इसके लिए भी उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए. यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव टू मेक देम लर्न, और धीरे 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 करके दे लर्न. सो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ intellectual disability that they have. Profound mental retardation, सबसे lowest level रहता है. IQ is below 20. Person has limited motor and cognitive skills, requires constant care, and it is often associated with disorders. अगर आपकी IQ is below 20, तो it often means कि आपको कोई mental disorder है जिसकी वजह से आपकी IQ इतनी लो है. किसी normal person को बहुत few cases रहेंगे जब किसी normal person को इतनी कम IQ हो, एंड अगर रहती भी है तो मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स को भी वो इनहिबिट करता है. तो इट गोज टू शो कि आपके इंटेलिजेंस का किस टाइप का इफेक्ट रहता है ऑन योर मूवमेंट एंड योर थिंकिंग स्किल्स. राइट, नाउ वी हैव हंटिंगटन्स डिजीज. ये स्पेसिफिकली दिस इज वन ऑफ द ओनली डिजीजेस दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर सिलेबस, तो ये इंपॉर्टेंट है. And Huntington's is a genetic disorder characterized by degeneration of neurons in the brain. तो जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं वो धीरे धीरे करके डिके होने लगता है. एंड ये डिके क्यों होता है? इट इज कॉज ड्यू टू अ म्यूटेशन ऑफ द HTT जीन. एंड HTT जीन का काम रहता है टू प्रोड्यूस द हंटिंगटन प्रोटीन. एंड जब ये हंटिंगटन प्रोटीन एक्सेस में प्रोड्यूस होने लगता है, इट लीड्स टू द डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स. Individuals start showing symptoms between the ages of 30 to 50, but early to late onset भी पॉसिबल है. कभी कभी 70s में दिखाने लगते हैं सिम्टम्स, कभी कभी 15 में ही दिखाने लगेंगे. इट इज एंटायरली पॉसिबल. उसको अर्ली वरना लेट ऑनसेट ऑफ हंटिंगटन्स बोला जाता है. सिम्टम्स इंक्लूड कोरिया, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिफिकल्टी इन प्लानिंग. कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ हंटिंगटन्स. तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू फ्लेल अराउंड योर आर्म्स, आपके मोटर मूवमेंट पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं रहता है. एंड देन डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ हंटिंगटन्स. भी ट्रीटमेंट्स इंक्लूड एंटी डिप्रेसेंट्स क्योंकि डिप्रेशन है, एंटी साइकोटिक्स क्योंकि मूड स्विंग्स होने लगता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, एंड देन फिजिकल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी इन ऑर्डर टू गेट सम कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. नाउ नेचर वर्सेस नर्चर ट्विन स्टडीज. ये इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है एटलीस्ट फॉर 2 या 4 मार्क्स. तो व्हेन यू स्टार्ट दिस आंसर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट राइट द डेफिनेशंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंपल्सरीली. दैट इज हाउ यू स्टार्ट द आंसर. अभी नेचर इज हेरिडिटी एंड नर्चर इज एनवायरनमेंट. राइट, आपको हमेशा से आपके जीन्स आपके पास ही रहते हैं, विदाउट देम यू विल बी नथिंग. राइट, तो इसके लिए हेरिडिटी को हम लोग नेचर बोलते हैं, एंड एनवायरनमेंट इज वेर यू नर्चर एंड वेर यू ग्रो. So that is why environment is also known as nurture. Twin studies can be used to study the interaction between heredity and environment, nature and nurture. Identical twins share 100% of genetic material. Fraternal twins share 50%. तो identical twins and fraternal twins में difference क्या होता है? तो when the egg gets fertilized in the womb, तो तब if the egg is monozygotic, अगर एक ही egg से दो twins आ रहे हैं, तो दैट दोज आर आइडेंटिकल ट्विंस. तो कंप्लीटली सेम उनका जेनेटिक मटेरियल रहता है. बट फ्रेटर्नल ट्विंस अगर हैं तो दैट मीन्स कि दो डिफरेंट एग्स फर्टिलाइज हुआ एट द सेम टाइम. इसके लिए दे ओनली शेयर 50% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो आइडेंटिकल ट्विंस दैट आर रेस्ड टुगेदर हैव सिमिलर जीन्स एंड सिमिलर एनवायरनमेंट. इसके लिए दे आर वेरी अलाइक. सो अगर आप लॉजिक लगाओगे, सिंस दे आर वेरी अलाइक, उनका 100% जेनेटिक मटेरियल है ही सेम, तो if we were to see identical twins that were raised separately, अलग अलग environment वो लोग अगर grow हो रहा है, तो the only difference between them would be their environment, right? क्योंकि heredity तो 100% same है. तो identical twins raised separately are the best example to study nature versus nurture, as the similarities correlate to the genes and the differences correlate to their environments. अभी the most prominent twin study was the Minnesota twin study. एंड उसका फाइंडिंग ये था कि जो ट्विन्स थे दे शोड सिमिलैरिटीज इन इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड इवन हैबिट्स.
तो दिस बेसिकली इम्प्लाइज कि जो आपके इंटेलिजेंस रहती है, आपकी पर्सनालिटी रहती है ना, आपके हैबिट रहता है, दे डिपेंड ऑन योर जीन्स मोर देन योर एनवायरनमेंट। ये जो तीन चीज़ें जो आप डेवलप करते हो, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल की वजह से आप उसको डेवलप कर पा रहे हो एंड नॉट मेजरली ड्यू टू योर एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स दोनों का पार्ट रहता है, दे हैव a relationship between them, they are not independent of each other, they are interdependent, but a major part is played by your genetic material rather than your environment. All right, that was it for this chapter. I hope you understood everything, all of the concepts जो मैंने cover किया. अगर कोई questions है please comment box में डालो, I'll reply जैसे ही मैं कर सकता हूँ. And please, it is a request, it would help me very much. Please like the video and please subscribe. Thank you so much.